our highest court, and that is in accordance with law. The senior lawyers like us, as already Mr. Kapil Sibal, before the pronouncement of the judgment, he already accepted that this decision, we are losing this, but this day will be remembered. Yes, I fully agree. This day is historical for those who are nationalists, and it is also historical for those forces who were acting against the interest of India. But in future, there will be no occasion when this Article 370 will become the part of Indian Constitution. The proposed bill affects the area, boundaries or name of the state. However, in the instance case, the state of Jammu and Kashmir was under President's rule and the state legislature was already dissolved, the functions of the state legislature were performed by the Union Parliament. Hence, it was not possible to ascertain the views of the state legislature. It follows that Section 3 of the Reorganization Act is valid. I have penned down an epilogue at the end of the judgment, maybe some sentiments involved. The Valley of Kashmir carries a historical burden. It has a social context. Thus, in involving constitutional status of the region, it is difficult to segregate the aforesaid. We, the people of Jammu and Kashmir, are at the heart of the debate. They have carried the burden of victims of conflict for several decades, originating from 1947 with the invasion of the Valley. Intervening political circumstances did not permit a redressal to the fullest extent of the invasion. The consequences remained in terms of parts of Kashmir being occupied by other countries. The second round of insurgency holds its origin to the latter part of 1980s. There was a troubled situation at the ground level, which was apparently not redressed. It culminated in the migration of one part of the population of the state in 1989-90. It is something that our country has had to live with, and without any redressal for the people who had to leave their homes and hearth. It was not a voluntary migration. The situation became so aggravated that the very integrity and sovereignty of our country was endangered, and the army had to be called in. Armies are meant to fight battles with enemies of the state and not really to control the law and order situation within the state. But then the entry of the army created its own ground realities in their endeavor to preserve the integrity of the state and the nation against foreign incursions. The men, women and children of the state have paid a heavy price. यूनिटरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया जम्मू कश्मीर को, वो फैसला भी ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां इलेक्शन कमीशन चुनाव की प्रक्रिया शुरू करे और 30 सितंबर 2024 तक अपनी चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ले। जहां तक जो कानून वहां लागू हो चुके हैं, राइट टू एजुकेशन और राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो सब चलते रहेंगे। इस बीच में जितने फैसले लिए जा चुके हैं, उन किसी भी फैसले को, केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने वापस करने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र सरकार का फैसला था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दिया है। अब आज के बाद ये जो बार बार आर्टिकल 35A के बारे में जो दलीलें दी जा रही थी, आर्टिकल 370 के पक्ष में दलीलें दी जा रही थी, मुझे लगता है उन सबको जवाब मिल गया है और आशा करता हूं कि आज के बाद अब लोग सब शांत रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के अधिकार का भी जिक्र किया और इलेक्शन के बारे में भी जिक्र, इलेक्शन भी होने चाहिए सितंबर तक, और साथ में स्टेट बोर्ड की भी बात कही। राष्ट्रपति के अधिकार के बारे में दलील दी गई थी और ये कहा गया था कि जब वहाँ पे विधानसभा नहीं है, विधानसभा भंग है, ऐसे में राष्ट्रपति शासन के दौरान वहाँ 370 नहीं हटाया जा सकता है, आर्टिकल 35A नहीं हटाया जा सकता है। वो जो प्रक्रिया अपनाई गई, गलत अपनाई गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, जो राष्ट्रपति ने वहाँ पे प्रक्रिया अपनाई है उसमें कोई खामी नहीं है। जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसके थ्रू एक मेमोरेंडम के थ्रू जहाँ पे नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें भी कोई खामी नहीं, वो बिल्कुल वैलिड है। तो अल्टीमेटली नटसल में ये कह सकते हैं कि अब आज की डेट से 335A और 370 इतिहास हो चुका है। इतिहास तो पहले हो गया जब सरकार ने हटा लिया था, लेकिन कुछ लोग फिर भी उसको जिंदा किए हुए थे कोर्ट के माध्यम से। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी फाइनल मुहर लगा दिया और सबसे बड़ी बात यह कि 5 जजों का एक पक्ष का फैसला है, कोई भी जजों में मतभेद नहीं है। 5 के 5 जजों ने कहा है कि केंद्र सरकार का फैसला ठीक है।